It is often said a family that eats together stays together, and that's why the dining room is an important space in your house. Hey, hi everyone, welcome back to my channel Amreen's Creation. And I am back with another video, and this time it's going to be our dining room makeover. It's my very first makeover on this channel, and I was super excited for that how it will be going on. So without further ado, let's get in the video. So this is our dining area. It's not very spacious, थोड़ा tiny सा है. As you can see, यहाँ पर दो partition है, one side for kitchen and another one for living room. Firstly मुझे इस wall का makeover करना था. You can see the golden stickers on the wall. मैंने इन्हें रिमूव नहीं किया है बिकॉज ये मेरी थीम में परफेक्टली मैच हो रहा था. एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ रॉयल ब्लू टाइप ऑफ मेकओवर थीम ली है. यहाँ पर रॉयल आ गया है तो वाइट एंड गोल्ड होना तो नेसेसरी है. दैट्स वाई मैंने इन स्टिकर्स को रिमूव नहीं किया है. इसके अकॉर्डिंग ही मैंने वॉल का मेकओवर किया है. फॉर दिस वॉल मेकओवर मैंने कुछ यहाँ पर DIYs किए हैं, जिनमें से मैंने एक DIY के कुछ वीडियो क्लिप ही इस वीडियो में शेयर किए हैं. अगर मैं एक DIY का फुल वीडियो भी इस वीडियो में शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती. सो रेस्ट ऑफ माई DIYs आई विल शो यू माई नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियो. सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल जाए. यहाँ पर आप जो DIY देख रहे हैं फॉर मेकिंग दिस, मैंने यहाँ पर 8 वेस्ट वुडन प्लैंक्स यूज़ किए हैं. रैंडमली मैंने इनको साइज़ में सिलेक्ट किया है. प्लैंक्स को मैंने फर्स्टली एशियन पेंट्स के वुडन प्राइमर से डबल कोट अप्लाई किया है. फर्स्ट कोट को कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद ही सेकेंड कोट अप्लाई करना है. देन अलाउ इट ड्राई फॉर कम्प्लीटली. नेक्स्ट यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर से डैबर और स्पंज की हेल्प से प्लैंक के आउटर एरिया को कवर करना है डैप करते हुए. देन कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद उस एरिया को मास्किंग टेप से कवर करना है. देन सेंटर वाले पार्ट में येलो एक्रेलिक कलर अप्लाई करना है. नेक्स्ट ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ कॉफ़ी मग और एनी डिज़ाइन. Then color it with white acrylic color. Next, draw the rough sketch of coffee beans. Then color it with brown acrylic color. Next, remove the masking tape and apply the varnish to protect it from dust, and it will give the glossy appearance as well. Take the measurement and attach the hanging clips for drill using drill machine. Now you can see the final outlook of these 8 wall hanging items. Let's move on to the complete makeover of this dining area.
So guys, I hope you like this makeover. Do let me know in the comment section below which part you like the most. I will desperately wait for your comments. So I will see you in my next video. Till then, bye.